अभी advantages and disadvantages of thermocouples हमें हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है thermocouples का advantage wide temperature -270 centigrade to plus 2700 centigrade up to wide range okay roughed construction stronger heavier breach circuits not required for temperature measurement thermocouple सीधा डाल सकते हैं उसको कुछ एक्स्ट्रा सर्क्यूट नहीं चाहिए additional circuit नहीं चाहिए electrical circuits comparatively cheaper in cost cheap costly okay it is economical good reproducibility वो स्टेबिलिटी है उसको अगर अगर वो करेक्ट में बताएगा सब क्वालिटी के अच्छा है वो सेंसिटिव है सब है उसका स्पीड ऑफ रिस्पांस इज हाई कंपेयर्ड टू थर्मोमीटर सिस्टम्स थर्मोमीटर से ये थर्मोकपल फास्ट है ठीक है ना calibration checks can be easily performed calibration checking easy में कर सकते calibration easy में कर सकते easy है using extension leads and compensating cables long distance transmission for temperature measurement is possible using extension leads करेंगे यूज करेगा compensate cable long distance transmission temperature measurement सब possible लॉन्ग वो केबल लॉन्ग डिस्टेंस में यूज करो किधर भी कितना डिस्टेंस में वो इधर है हम लोग आउटपुट आ जाएगा वो में नो प्रॉब्लम लॉस नहीं हो जाएगा सिग्नल लॉस नहीं हो जाएगा गुड एक्यूरेसी है compensation circuits is essential for accurate measurements compensation circuit is essential for some for actually compensation circuit नहीं चाहिए बोलते but for some accurate measurement के लिए some place में few place में वो compensation circuit sometimes चाहिए they exhibit non-linearity in the EMF versus temperature characteristics EMF versus temperature characteristics versus non-linearity हो जाएगा linearity नहीं हो जाएगा ये में थोड़ा प्रॉब्लम है बात में many applications need signal amplifications signal amplify के लिए many application चाहिए और signal conditioner signal booster amplifier ऐसा सर्किट चाहिए sometimes proper separation of extension leads from thermocouple is required to avoid stray electrical signal pickup proper separation of extension leads from thermocouple is required to avoid stray electrical signal pickup. Actually, extension lead separate extension lead चाहिए thermocouple के लिए क्यों बोलेंगे तो वो avoid stray electrical signal pickup stray electrical pickup हो जाएगा stray magnetic electrical field हो जाएगा इसको ले स्टैटिक एनर्जी हो जाएगा उसके लिए एक्सटेंशन लीड चाहिए सेपरेशन एक्सटेंशन चाहिए ओके अभी एक ट्रांसड्यूसर एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर ये लीनियर है ये वर्ड से मालूम पड़ते हैं वो वेरिएबल हो जाएगा वेरी कर सकते हैं डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर से 3 coil mutual inductance device एक्चुअली ये लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए शॉर्ट में एलवीडीटी बोलते हैं एल फॉर लीनियर वी फॉर वेरिएबल
D for differential, T for transformer. 3 coil म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइस. अभी इसको कंस्ट्रक्शन देखेगा, ठीक है ना. ये क्रॉस सेक्शन का भी, ठीक है ना. लीनियर मोशन टू बी डिटेक्टेड, ये मूवमेंट हो जाएगा, ये कोर बोलते, ठीक है. ये डायरेक्शन में ना इधर ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक है ना. अभी ये सेकेंडरी कॉइल नंबर 1, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल नंबर 2, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है. सील्ड ट्यूबुलर बॉडी, ये सील्ड ट्यूबुलर, ट्यूब कैसा ये सील क्या को ट्यूबुलर बॉडी. ये कनेक्शन किधर से निकाला, ये एक्चुअली डिफरेंस वोल्टेज वी सेकेंडरी 1, ये सेकेंडरी का है 1, वी सेकेंडरी, ये वी 72, ये वी 70, वोल्टेज ही 72, ठीक है ना. इधर से मिलेगा. अभी वी, ये है ना, ये वी सेकेंडरी, इसका अंदर ये मिलेगा, इसका अंदर ये मिलेगा, ठीक है ना. अभी कनेक्शन का इधर से सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल से नंबर 2 से मिलते, बाद में सेकेंडरी कॉइल नंबर 19 से मिलते, ठीक है ना. ये प्राइमरी कॉइल से कांस्टेंट एसी एक्साइटेशन वोल्टेज है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना. अभी ये इलेक्ट्रिकल, प्योर इलेक्ट्रिकल में देखेंगे, इलेक्ट्रिकल ड्राइव में ये सब मिक्स में ना. अभी प्राइमरी एसी इनपुट वोल्टेज, ये कॉइल है, कॉइल प्राइमरी वाइंडिंग, ये 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 वी ए प्राइम सेकेंडरी 1, सेकेंडरी 2 कॉइल, ये ऐसे सीरीज में है, ठीक है ना. अभी इसको मैं ये इसको वी आउट कितना है, वी ए माइनस वी बी आउटपुट हो जाएगा. कैसा आ जाएगा, ये मोशन हो जाता है ना, उसका वजह से इधर आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जाएगा. ये इधर ये टाइम थोड़ा कमती है, इधर ये टाइम जास्ती, क्यों वी ए दोनों बी पी बी दोनों है, इधर ओनली वी है, ऐसा चेंजेस होगा. अभी डिस्टेंस ट्रैवल्ड -10 टू +10, ये वही एक्सिस में एम्पलीट्यूड एंड फेस आउटपुट है. अभी ये फेस, ठीक है ना, ये वी आउट है, कितना वोल्टेज आया, किस ट्रैवल हम बोला ना, कितना इधर पूरा आएगा तो ट्रैवल जास्ती आएगा तो वोल्टेज जास्ती हो जाएगा, एम्पलीट्यूड फेस आउटपुट भी जास्ती हो जाएगा, ठीक है ना. बट फेस कमती होती है, ठीक है. ये वीसी देखेगा, वीसी हम लोग देखते ना, वीसी में इधर तक आएगा तो को इधर तक आ जाएगा वोल्टेज, ये में होएगा तो डिस्टेंस कमती है तो ऐसे हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ये शॉर्ट में आर वी डी टी बोलते हैं. आर फॉर रोटरी, वी फॉर वेरिएबल, डी फॉर डिफरेंशियल, टी फॉर ट्रांसफार्मर. RVDT transformer is a RVDT is a type of electrical transformer used for measuring angular displacement. ये angular displacement or linear a rotary. RVDT construction is similar in construction to LVDT. LVDT का इसे same similar construction है, except that a came-shaped core replaces the core in the LVDT as shown below. वो उधर ये नहीं, लीनियर ये नहीं, एक्सेप्ट दैट केम शेप्ड कोर रिप्लेसेस, केम शेप्ड हो जाता है. ये प्राइमरी एसी इनपुट वोल्टेज ऐसा ऐसा रोटेशन हो जाएगा, सही ना.
ऐसा ऐसे सेम सेकेंडरी का कनेक्शन, ठीक है ना। सेम है वी आउट ये वी आउट इक्वल टू वी माइनस ए वी ये इसका अंदर का मिलता है ना वो ये है वी बी ये वी बी का वोल्टेज ये है दोनों माइनस वो करेगा वो टोटल वी आउटपुट आ जाएगा। इसका मतलब ये कैसा रोटेशन हो जाएगा ऐसा इधर आउटपुट चेंजेस हो जाएगा, ठीक है ना। वी सेपरेट मिलेगा वी ए मिलेगा पी भी मिलेगा। ये नेक्स्ट capacitive transducers. Capacitive transducers, the principle of these type is that variations in capacitance are used to produce measurement of many physical phenomena such as dynamic pressure, displacement, force, humidity, and etc. The principle of this type is that variations in capacitance का वेरिएशन हो जाएगा आर यूज टू प्रोड्यूस मेजरमेंट मेनी फिजिकल फोनोमेना और मेनी फिजिकल वेरिएबल से कैपेसिटेंस भी वेरी हो जाएगा फिजिकल वेरी हो जाएगा उसको करस्पॉन्डिंग ये भी वेरी हो जाएगा सच है डायनामिक प्रेशर वेरी होगा तो कैपेसिटेंस वेरी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेरी होगा तो कैपेसिटेंस वेरी हो जाएगा फोर्स चेंज हो जाएंगे तो कैपेसिटी चेंज हो जाएगा ह्यूमिडिटी चेंज होगा तो कैपेसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। एंड इक्वेशन फॉर कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर ले ये इक्वेशन के सी इक्वल टू 0.088 के ए इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टी इसको यूनिट पिकोफारेड बोलते हैं पीएफ बोलते हैं के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए हाँ अभी ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर ये के है ना ये के इन एयर में कंडीशन में के इक्वल टू 1 है। नेक्स्ट ये बोलेंगे तो क्या ये के बोलेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बट फॉर एयर के लिए 1 ये के एरिया ऑफ वन साइड ऑफ वन प्लेट के ये बोलेंगे तो एरिया ऑफ वन साइड ऑफ दो प्लेट है ना ये वन साइड में वन प्लेट ये और ये प्लेट है तो और ये नंबर ऑफ प्लेट्स टू ये बाद में ये 3 भी हो जा सकते 4 भी हो जा सकते ये नंबर ऑफ प्लेट ये एन ठीक है ना। टी सेपरेशन ऑफ प्लेट्स सरफेसेस डी डी है ना बॉटम में बॉटम नीचे है डिनोमिनेटर में ये ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ प्लेट सरफेसेस सी एम इसको सेपरेट इसको डिस्टेंस कितना है इसको ये डिस्टेंस प्लेट ठीक है ना। ये कैपेसिटर का प्लेट को डिस्टेंस कितना है कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू होल्ड एन इलेक्ट्रिकल चार्ज कैपेसिटेंस का एबिलिटी क्या है उसको बॉडी टू होल्ड एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सॉरी इलेक्ट्रिकल चार्ज का होल्ड करेगा का बॉडी वो ये उसको एबिलिटी वो एक कैपेसिटेंस ठीक है ना। कौन क्या चीज इलेक्ट्रिकल चार्ज होल्ड करते वो कैपेसिटेंस बोल सकते इंडक्टर भी वो अलग बात है वो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है टाइम में उसको ये बट इसको आप हो जाएगा बाद में उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चार्ज का वो होल्ड अप करते हैं ठीक है। कैपेसिटेंस is also a measure of the amount of electrical charge stored for a given electrical potential